On the view display option, and in the UCS just untick the origin को untick करो. As soon as you click over here, it will shift it. तो फिर आप कितना भी उसको मूव करो, it will not shift or it will not relocate from this position. हो गया. As I discussed yesterday, at the starting we have to specify the units. हमको units के format को specify करना बहुत important रहता है. So how to do that? Check. See. In a format, we have a units. This part I discussed yesterday. Go to the units. In a decimal, put it as a decimal only. Precision 0. We don't consider any point over here. Convert inches to the millimeter. So this is the very important part, millimeter. Format, units, and millimeter. Why it is important? Because you are providing the whatever model which we are going to build it with this 3D modeling software. You are going to provide that particular object to the 3D printer. So you have to mention it as a millimeter, then only you can make that particular part over there. So keep it as a millimeter and okay. Likewise. Okay. तो फिर हमने units set कर दिए. Let's draw. Today I am going to draw only one simple object, and I will show you how to draw it and how to make that STL file format so that we can print that particular object. So on the right hand side over there, we have a number of options. If you just move your cursor, अगर आप cursor simply move करते हो, it will show likewise. Poly solid is there, then box, then wedge, then cone, sphere. Likewise, we have option. On the second line, we have extrude, then the press pull operation, then revolve operation. Likewise, number of operations are there. So we are mainly using this press pull extrude and press pull operation for our drawing purposes. Okay. On the bottom side, there is one check box. In that we can see the unsaved current view is mentioned. Unsaved current view over here. If you just click, the drop down list will appear, and it will show the top, bottom, front, back. Likewise, the number of views are shown over here. You can select anyone. आप कौन सा भी select कर सकते हो. Since we are working in a 3D, to get a feel of a 3D or to draw it, just select the southeast isometric. Southeast isometric select करो बस. Just take that southeast isometric. Now, what is the different thing in other options and this southeast or other thing that we will see. थोड़ा सा draw करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे दिखता है. Now let's draw one object. Let's take a box. As if you click over here, it will the box will be command will be selected, or in the command line over here you can type the box also. Likewise, आप यहाँ पे box टाइप करके उसके अंदर जा सकते हैं. So what is written? Specify the first corner. फिर मैं कौन सा भी एक फर्स्ट कॉर्नर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ. So as I drag it, सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैं उसको ड्रैग करता हूँ, it will ask me the two things. The first two length and the width are shown. Two squares are shown near to the cursor. So you can enter 50. So this is the one dimension. Let's say it is the length. Press tab, so it will go to the another. Let's take it as a 60. Enter. तो फिर 50 by 60 का एक छोटा सा पार्ट एक रेक्टेंगल क्रिएट होता है. Likewise, if you just drag the cursor in upward direction, it will show the height. If you drag the cursor in a downward direction, it will show the depth. A depth show करेगा. Likewise, so to create the box, we require three dimensions: length, width, and the height. Length, breadth, and the height. So here length is 60, width is length is 60, width is 50. Now height I will give again it as a 50. Press enter.
Z enter, A enter. So with the help of a Z and enter, A enter, the entire scale will be occupied likewise. So it will look like this. Okay. Okay. Over here, if you see on the right hand side, it is mentioned the unsaved current view. Unsaved current view है. उसके नीचे और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है. So over there, it is mentioned realistic. Realistic करके कुछ तो mention. Just check what is there in a realistic. अगर आप realistic में जाके देखो, so number of options are shown over here. If you just take the first one, it is the 2D wireframe. If you select the 2D wireframe, it will look like this. जैसे कि कल हमारा जो एग्जांपल था, कल जैसे विंडो थी वैसे वो दिखेगा, तो 2D में आपको दिखने वाला है. दिस इज नथिंग बट 2D wireframe. If you select the second one, that is the 3D hidden, यहाँ पे 3D पार्ट हिडन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा likewise. Then this is the third one, 3D wireframe. And this is the conceptual one, the last one, the conceptual one. Likewise, this is the conceptual, and over here we get the realistic part. The last one is nothing but the realistic, this one is nothing but the realistic. So that in a such a way we can check how it will look. Okay, now we have drawn the box over here. So box draw करने के लिए और एक process है. So you can create, you can draw a rectangle from here. एक rectangle आप draw कर सकते हो. Likewise, see, हमने एक ऑप्शन डाल दिया. So फिर I will write 50 tab 60 enter. A 50 by 60 का एक rectangle हो गया यहाँ पे. You can see it. Likewise, so this is one rectangle of a 50 by 60. Is it visible? यहाँ पे है देखो. ठीक है. Now below the box, एक box है ना, उसके नीचे below the box वो है वो extrude command. हमारे यहाँ पे एक extrude command है. So just select that extrude command. As you select the extrude command, it will ask select the object to extrude. ये आपको पूछेगा कि object कौन सा है, उसको select करो. So you can select that particular object. ये object आप select कर सकते हो and press enter. Select the object and press enter. Again, such a type of a thing will come. As you move up, it will show the height. आप ऊपर उसको extrude कर सकते हो. Otherwise, you go to the downward direction. आप नीचे पे उसको extrude कर सकते हो. So I will prefer to go up. I will again enter 60. So it will become 50 by 60 का एक again cube बन जाएगा. So this is the another way to draw a box by the extrude command. I will again show you कि कैसे करेंगे करके. See, check. मैंने delete किया. First take a rectangle. Rectangle ले लो. Click over anywhere. Enter 50 tab 60. Enter. तो फिर 50 by 60 का एक plane बन जाएगा. Likewise. Then हाँ, ये मैं कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आपका जो स्क्रोल का बटन है उसको प्रेस करके आप यू कैन रोटेट इट, यू कैन मूव इट लाइकवाइज. हैंड हो जाता है वहां पे. दिस इज कॉल्ड एज अ पैन. यू कैन मूव इट लाइकवाइज. नाउ टू एक्सट्रूड इट, below the box there is a one command that is called as extrude. Just select that extrude command. Now see what software required. Select the object to extrude. आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एक्सट्रूड करने के लिए. Now we wish to make a box. तो फिर ए रेक्टेंगल को आप एक्सट्रूड करोगे तो फिर उसका बॉक्स बन जाएगा. So we will select that rectangle, press enter button. As soon as you press the enter button, it will show likewise. ऐसे आपको दिखाई देगा. So either you can go up or you can go down in this way. So just enter the height, press enter. So it will look like this. ऐसे दिखेगा. Is it clear? Now I will delete this part. Okay. Just try it. Okay. ये try करो आप एक बार. I will wait for 2 minutes.
Okay. Now see. Now let's make a hole inside it. इसके अंदर एक hole बनाएंगे, ठीक है? So how to make a hole? एक 3D ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमको होल बनाना है. Let's see how to make a hole over here. So to make a hole, I will select a circle. यहाँ से मैं सर्कल सिलेक्ट करता हूँ और you can type the circle. As you select the circle, it will see, it will highlight the plane from where you can draw a circle. यहाँ पे मैं सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ like this. But for that we require the center point. हमको एक center point लगेगा. So first select the line. You can select the line over here or just type L, enter, and draw one line likewise. आपको दो triangle दिखेंगे. So with the help of those two triangle, just draw line. For that keep this OSNAP on. ये मैंने आपको बोला था कल OSNAP क्या है, उसको ऑन करो. सेटिंग में जाके सारे ऑप्शन को सिलेक्ट और करके ओके करो. OSNAP, राइट क्लिक, सेटिंग, select all, okay. So keep this OSNAP on so that you can draw a line over. आपको एक यहाँ पे लाइन दिखाई देगी likewise. Then select the circle. Just move your cursor likewise. Select the midpoint. Now you have to draw the circle, or you have to draw the circle to make a hole. So I will enter 15. एक 15 mm radius का circle में वहाँ पे draw कर. Likewise. I will just delete this line because उसका काम खत्म हो गया. Now I have to make the hole inside it. इसके अंदर मुझे hole बनाना. So adjacent to the extrude there is a one command called as a press pull. So select that command, press pull. What is written? Click the inside the bounded area to press or pull. In a command line, just check. हमने press pull को select. कौन सा command check करना है? Press pull. It is written over here. Press pull. Click the inside the bounded areas to press or pull. इसके अंदर आपको select करना है. As you select it, it will move up. As you drag up, it will move up, or it can go down. नीचे भी जाएगा. Likewise. As it move up, extra वाला part है पे तैयार हो जाएगा. If you go down, it will create the hole. देखना है? See, it will make hole. यहाँ पे hole बन गया. To check it, आपको देखने के लिए just enter orbit. Okay. Now you can see hole likewise. आप इसके ऊपर hole देख सकते हो. एक ऐसे किया मैंने, फिर से आप यहाँ पे आके नॉर्थ ईस्ट करके आप देख सकते हो. हाउ मैंने उसको रोटेट कैसे किया? जस्ट राइट ऑर्बिट, एंटर. इट विल एंटर इनटू द ऑर्बिट कमांड. जस्ट होल्ड इट एंड रोटेट इट. आप ऐसा रोटेट करो. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. Again come back to the northeast direction. Northeast direction में कैसे आ जाए? Like this. Now what we are wishing to do, यहाँ पे हम देखो इसकी जो we can provide this follow elementer, but the side of this object are very sharp. ये sharp है ना, तो फिर उसको हम थोड़ा सा फिलेट दे सकते हैं. फिलेट मीन्स व्हाट? टू मेक इट कर्व. यहाँ पे कर्व तैयार करना, उसको फिलेट बोलते हैं. फॉर दैट वी हैव अ ऑप्शन फिलेट ओवर हियर. यहाँ पे हमारे पास फिलेट करके एक ऑप्शन है. सो यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर. फिलेट लेके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो. See what is it when select the first object, or in the bottom line select the first object, or undo, polyline, radius, trim, multiply. Likewise the options are shown. Now we are wishing to make curly साइड ओवर हियर. ये जो कॉर्नर से उसको थोड़ा सा कर्व देना है हमको, तो फिर एक रेडियस हमको एंटर करनी पड़ेगी. फिर से देखो, जस्ट सिलेक्ट द फिल्टर. यहाँ से सॉरी सिलेक्ट द फिलेट, और यू कैन एफ एंटर. आप एफ एंटर करके भी फिलेट करना जा सकते हो, और
You can write the fillet over here. Fillet के अंदर भी आप यहाँ से जा सकते, ठीक है. So I will just select the fillet. Then R for the radius. Select the radius. देखो यहाँ पे कौन सा भी ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो फिर उसके अंदर जो कुछ भी मेंशन किया, you can select that particular part. So R, enter. Specify radius, let's take a 5 mm. 5, enter. Now select the side. So I will select 5, enter. Likewise. You can select multiple edges also. आप चाहे उतने edges select कर सकते. Okay. कुछ दिखाई दे रहा है? See. यहाँ पे हमने एक die बना दिया. Likewise. So now if you check, the corner of this part is perfectly round. ये perfectly round है. कैसे किया मैंने? फिर से देखते हैं. Select the fillet over here. Fillet, click on a fillet. Then we have to enter the radius. So type R, enter. You can type fully radius also over there. So type R, enter. This way the fillet radius will become, let's say it is 5. Enter. हमने 5 करके उसको select कर दिया. Now we have selected the fillet. We have entered the radius R, which is equal to 5. Now what is mentioned over there? Select the first object. कौन सा object है हमारा? So this is our object. हमने object select कर दिया. Press enter. Then say the fillet radius 5. Yes, enter. Select an edge. You can select the edge. Likewise, आप edge select करो सारे. Likewise, I have selected all the edges. Press enter. तो फिर पूरा का पूरा part इसमें convert हो जाएगा. Okay. Now let's see. I have to make one more hole over there. I will, okay. I will make one more hole over there. So okay. Select the select the preschool. If you ये मैंने क्या किया, preschool करके उसको बाहर खींच रहा हूँ. You can again insert it likewise. उसको insert करके देखोगे तो फिर ऐसे फोल्ड हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? Let's make one more hole. यहाँ पे भी एक hole बना देते हैं. How to do that? Circle. Preschool. Likewise. Okay. Okay. हाँ, अब इसको कट करके देखेंगे कि कैसे दिखता है करके. That we have split. So with the help of a split command, sorry, slice
स्लाइस स्प्लिट नहीं है, स्लाइस करके कमांड है. हाँ, okay. So with the help of a slice command, we can cut it. So select the object, slice type करो, उसको object को select करो, enter करो. See it, what is written? Specify the start point of a slicing plane. Start point कौन सा है? Let's say this is the start point. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हम नीचे जाएंगे यहाँ तक. लाइकवाइज ये हमने कट कर दिया. फिर से देखो, इसके पहले थोड़ा सा उसको रोटेट करके देते हैं. स्लाइस, एंटर. ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर दिया, एंटर. स्टार्टिंग पॉइंट, एंटर. सी, ऑर्बिट, एंटर. सी, वी हैव कट इट. हमने उसको कट कर दिया. लाइकवाइज, इज इट क्लियर? सो विद हेल्प ऑफ अ स्लाइस, जहाँ पे भी आपको उसको कट करना है, यू कैन कट इट. दिस इज द कमांड which is used. Okay, so this is the object. So अब तक हमने कौन से देखे ये कमांड यहाँ पे. We have discussed the box, how to draw the box. So with the help of a box command, we have drawn the box. Then we also learned with the help of a rectangle and the extrude command. Rectangle on the left hand side, extrude on the right hand side. We can create the box. हम box create कर सकते हैं. Similarly we can create the cone likewise. ऐसे cone भी बना सकते हैं. Similarly we can create the cylinder in a such way. So you can create the sphere in such a way. So you can do almost each and everything. आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट वहां पे क्रिएट कर सकते हो. Likewise. Okay, so that part we discussed. Then we discussed the use of a press pull command. With the help of press pull command, we can make a excess part or we can make a hole inside it. आप इसके नीचे hole भी बना सकते हैं. So that is the press pull part. And with the help of orbit, 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 you can and the left side you can rotate it. आप उसको rotate करके दिखाई देते हैं. You can rotate it likewise. Likewise. ठीक है. Now how to save it for the 3D printing. 3D printing के लिए उसको कैसे सेव करेंगे देखते हैं. So you can go and save file, export, and file type. Again see file, export. कहाँ पे export? यहाँ पे lithography.stl. lithography.stl की कमांड है, उसके ऊपर क्लिक करो and you can rename it as cube and save. So हाँ, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक एंटर. So that part will be get saved over there. File, export. So in a document, we have a folder called cube. So I will show you where is that part. See, this is a cube. So this is 3D object. आप देख सकते हो इसको. ये ऐसा आपका ऑब्जेक्ट बनेगा 3D प्रिंटर में. Likewise, you can create an object in a 3D printer. I hope it is clear to you.
Okay. Similarly, yesterday we एक part हमारा बाकी रह गया था, so I will just take that part. So convert into the AutoCAD Classic. मैं AutoCAD Classic में convert करता हूँ और just close it. Just open the AutoCAD Classic, and if you drawn any object over here, let's say this is our object, और ये आपको इसको लेजर कटर के ऊपर कट करना है. If you are wishing to cut it on the laser cutting, how to do that? Go to the file, again export, और यहाँ पे हमें STL नहीं लेना है. So over here, okay, save. Yes, sorry, export नहीं करना उसको, file save as. हाँ, over here. हाँ, yes. So this DXF format, AutoCAD 2007 DXF file format में उसको save करना. Again, check. If you select it, file, save as. Let's say it is Pentagon, and the file format is DXF 2007 का. Like this, AutoCAD version DXF save. So A वाला file format जो कुछ भी है, so this one, this is the Pentagon. So this file, Pentagon DXF file. This file is nothing but the file for your 2D laser cutter. Likewise, so to laser cutter के लिए DXF में save करना है, 3D printer के लिए STL पे save करना है. So I hope it is clear to you. So we will stop our session today here. Thank you very much for attending it. Thank you very much. You can leave. हमला. So thank you. कोण नाही म्हणत. कोणीच नाही म्हणत. अरे मी होस्ट नाही. हॅलो. वाशिका सर. हा बोला. हाँ, प्लीज एंड द मीटिंग. काय करू? मीटिंग एंड करा. ओके ओके.